I hope I am audible to all of you. And let IPS if I'm audible to all of you. And let IPS. Okay. So, guys, today we're going to talk about one very important topic for your CLAT PG purpose. That is definitely parliamentary privileges. Okay. Parliamentary privileges के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. But before that, please share in the chat box. Am I audible to all of you or not? Am I audible to all of you or not? Can you type in the chat box? Am I audible to all of you or not? Yeah. Then we're going to start. Okay. Then we're going to start the parliamentary privileges. Can you type in the chat box? Am I audible? Then we're going to start today's conversation regarding parliamentary privilege. Now, before starting parliamentary privilege, I would like to ask all of you is that in which article do we find parliamentary privilege? कौन से article में parliamentary privilege है Indian Constitution में? Okay. Okay. Am I audible? Can you type yes if I'm audible? Not getting responses, guys. Can you type yes? So, in which article do we have? In which article do we have the parliamentary privileges enshrined in our constitution? कौन से article में parliamentary privilege है? Okay. Now, recently, Supreme Court has given a very important judgment for your CLAT PG preparation and for your other LLM exams and UGC exam, that is in relation to parliamentary privilege. जो basically ये एक बहुत important judgment को overrule कर रहा है, and that we are going to talk about. But आज हम लोग थोड़ा concepts के बारे में जानेंगे. We're going to learn about the concepts today, and we're going to learn what Supreme Court has basically given judgment on. Okay. So first we're going to talk about the parliamentary privilege, then we're going to talk about what was the ruling before and what has been overruled. The three things we're going to discuss in this session. Okay. But उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछा था parliamentary privilege क्या होता है और parliamentary privilege कौन से article में है. So basically if you go and check it out, parliamentary privilege is basically enshrined in article 105 of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में हम लोग के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को मिलते हैं हम लोग. ठीक है. नाउ आर्टिकल 105 में many of you might have heard article 105, many of you might not have article 105. ठीक है. तो आर्टिकल 105 के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं आर्टिकल 105 क्या है. ठीक है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहाँ पर जानेंगे आर्टिकल 105 के बारे में. ठीक है. आर्टिकल 105 बेसिकली टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. ओके. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में आर्टिकल 105 बात करते हैं. Now I try to log in from another system whether everything is working fine or not, but I'm not able to get it. There is some problem in that also. ठीक है. तो I'd like to share my screen और उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. ठीक है. So आज हम लोग जो 105 के बारे में बात करेंगे. ठीक है. So 105, if we directly open the article 105 and we're going to understand what it is all about, हम लोग I just get into the basic understanding. I hope my screen is visible to all of you. Make random just I opened a page regarding the article 105 so that I can explain it to you. Okay, what it is all about. So article 105 basically talks about powers and privileges. Okay. So powers and privileges of the House of Parliament and of members and committees thereof. It basically talks about this 105. Now, article 105 is a very important article. There are very famous cases are related to this article, and there are very infamous cases are related to this article also.
बहुत सारे केसेस है जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे भी, ठीक है। एक बहुत मेजर रूलिंग था पीवी नरसिम्हा राव के जजमेंट के ऊपर, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर केस। नाउ आप अगर 105 को देखेंगे, ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली so probably my another system has opened up now. Powers and privileges में यहाँ पर member of parliament 105 talks about that. Now another particular article which is similar to this, very similar to this, that's basically found in article 194, that is for the MLA, member of legislative assembly. ये दोनों particular article बहुत similar है. So if we understand one article, then another article is to be read simultaneously, वो बहुत easily समझ में आ सकता है. Now article 105 के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है. Now article 105 basically talking about, after reading the provision itself, power and privileges. अच्छी बात है सर. Now what kind of power privileges, किस चीज में power privileges की बात करते हैं, ठीक है, and how they are going to get these power privileges. Now we are understanding member of parliament, they are basically enjoying these powers and privileges, but why they have been given these power privileges, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको क्यों दिया गया है, ठीक है, और कितना पावर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स इज पावर्स एंड प्रिविलेजेस दैट आर गिवन इन आर्टिकल 105, दिस कमिंग फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम, ठीक है. एंशिएंट टाइम उतना भी एंशिएंट नहीं है, इफ आई से इट इन टर्म्स, ठीक है. 1600 1700 सेंचुरीज में जब आपके किंग्स के एरा, इट वाज देयर in that time, okay, the executive basically plays a very important role, and the parliament, okay, the people in the House of Commons, which is there in Britain, so in that case they are not going to get that much voices to raise against the king or the executive. That time, to give them the extra power, this particular right or privileges or the powers have been enshrined that time. Now after that, this particular system was being followed. So you will get to see the mention of House of Commons, you will get to see in this particular article also, ठीक है. इसके साथ भी बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, बट उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा नहीं जानना है. What I mean to say, एक टाइम था जहां पर एग्जीक्यूटिव यूज्ड टू कर्टेल द पावर्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, ठीक है. उस टाइम ये बेसिकली राइट दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है, ड्यूरिंग द वोटिंग, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन, एनीबडी कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अट्रोसिटीज और एनी काइंड ऑफ अब्यूज, एनीथिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, उसके बारे में बात किया जा सकता है, ठीक है. दैट्स व्हाई दिस पावर्स प्रिविलेजेस हैव बीन गिवन. Now, अगर आर्टिकल 105 देखा जाए, subject to the provisions of this constitution, to the rules of standing orders regulating procedure, okay, if you see it very very clearly, okay, one second. Yeah. So if you see it very very clearly, one second. So subject to the provision of this constitution, rules, regulation, procedure of parliament, it is related to the rules and standing orders of the regulating procedure of the parliament. There shall be freedom of speech in the parliament. Now, one very important, the two very important thing that you can notice here, there shall be a freedom of speech, okay. Now, I hope many of you already aware there is another particular article related to freedom of speech, and I hope you are aware that is Article 19. Especially Article 19(1)(a), that also talks about article freedom of speech and expression, right? So freedom of speech and expression, that is one of the part that was pretty much relevant to this Article 19(1)(a) and 105(1). Now there is two aspects.
there shall be a freedom of speech. Okay. There shall be in parliament. Oh, okay. So in parliament there shall be freedom of speech. Now if we talk about article 19(1)(a), अगर आप article 19(1)(a) खोलोगे and आप article 19(1)(a) देखोगे, so you'll get to see you have every citizen have freedom of speech and expression. बहुत बढ़िया. But in the article 19(1)(a), there is another very important aspect to it, which makes the article more complete when you talk about article 19(2). ये article तभी complete होता है. So article 19(1) के साथ article 19(2) को भी read out करना होता है. As a student, as a law student, you know it. But when we talk about article 1051, here it is particularly there shall be freedom of speech in parliament. Simple. Period. Game over. That's all. In article 19(1)(a), it is not complete without the provision of article 19(2). Now, what is article 19(2)? Many of you already aware what is article 19(2). Article 19(2) basically puts a reasonable restriction on article 19(1)(a), freedom that has been enshrined in constitution. So article 19(1) में जो आपको freedom दिया गया है, article 19(2) उसको restrict करता है. सर कौन से ग्राउंड में restrictions होते हैं? So there are several grounds enshrined there, like sovereignty is there. Okay, उसके बाद आपके there are friendly relations to the states and other aspects. So defamation is there. So there are other aspects to it. You will open the barrack and you will get to see that. Now उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पर, but यहाँ पर जो सबसे important चीज है जिसके बारे में हम लोगों को बात करना पड़ेगा, that is in relation to whether article 19(1) is the absolute right or absolute fundamental right. ठीक है, एक article 19(1) है, whether it is absolute in nature. आपको अगर ये सवाल पूछा जाए आर्टिकल 19(1) एब्सोल्यूट है या नहीं, एब्सोल्यूट मतलब सर, एब्सोल्यूट मतलब ये फ्रीडम ये क्या हम लोग को एनी सर्कमस्टेंसेस में मिलेगा, एनी टाइम मिलेगा? बोले नहीं, आर्टिकल 19(2) इज गोइंग टू कर्टेल सर्टेन ग्राउंड्स, अंडर दोस ग्राउंड्स दिस पर्टिकुलर फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, तो आपको बेसिकली ये चीज जानना है कि दिस एब्सोल्यूट नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, इट इज नॉट एब्सोल्यूट in that sense. Okay, so article 19(1) is not absolute. So आपको अगर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में whether article 19(1)(a) is absolute in nature, no, article 19(1)(a) is not absolute in nature. Coming to article 105, so article 105 doesn't have this reasonable restriction attached to it. उसमें कोई reasonable restrictions होता नहीं. तो article 105 के freedom of speech जो member of parliament enjoy करते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एवरी सिटीजन एंजॉय करते हैं इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हिच इज अ बिट डिफरेंट इन नेचर. ठीक है, सो आर्टिकल 19(1)(a) के फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ ग्राउंड के अंदर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहता है, खत्म. हियर फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इट इज देयर, अल्टीमेट, इट इज very anything they can talk about, if anybody talking about any other aspect to it. ठीक है, तो यहाँ पर कोई reasonable restrictions की बात नहीं हो रही है. ठीक है, so freedom of speech is very much absolute. Now another very important aspect जो article 19(1)(a) and article 105 को basically distinction और demarcate करता है, that is in article 105 specifically mentioned is it's in parliament, it's in parliament. Now if you open the article 19(1)(a), you will not find any kind of geographical limitations there. Now geographical limitations, what I mean to say, वहां पर लिखा नहीं जाता है कि आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट के अंदर ही आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. इट डजंट डिनोट दैट. ये आप जिस गांव में रह रहे हो उसी गांव के अंदर आप अगर रहोगे तभी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा, नहीं. There it's a there is no geographical limitation. There is no geographical limitation attached to article 19(1)(a). As simple as that. Period. Here in article 105 there is geographical limitation. There is geographical limitation which is very important. The freedom of speech can only be enjoyed in parliament, in the periphery of the parliament. So if
you have to understand कि members of parliament की ये part privilege दूसरी जगह enjoy कर सकते हैं? Well, absolutely. They can enjoy this freedom of speech in parliament. That you have to understand. Okay? अच्छा. Any query so far? Whatever I have communicated, इसमें कुछ query है किसी को? Any query can you type in the chat box if you have any query regarding this. If you have any query, type in the chat box if you have any query. Okay. Now, the next fundamental thing that can be talked about here, which is another very important part, और जहां से cases के जन्म होते हैं, that's where all the cases were basically introduced and cases were born or cases were discussed in the Supreme Court, that is 1052, which is very very controversial in nature और उसका interpretation भी बहुत controversial है. ठीक है. So member of parliament shall be liable to any proceedings in any court of law. ठीक है. आप अगर इसको देखोगे, so member of parliament no member of parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof. No person shall be liable in respect of the publication or anything under the authority of either house of the parliament or any report, paper or votes proceeding. तो यहाँ पर दो पार्ट है. The first part is pretty much in related to no member of parliament shall be liable to any proceeding in any court. तो कोई भी member of parliament कोई कोर्ट के प्रोसीडिंग के अंदर लायबल नहीं होंगे अगर उन्होंने एनीथिंग इज सेड ड्यूरिंग द पार्लियामेंट और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट. ठीक है. तो पार्लियामेंट में कोई वोट दिया गया, कोई भी बात किया गया, एनी व्यूज दैट ही हैज ओपाइंड ऑफ इज नॉट गोइंग टू बी लायबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ओके. एंड दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्टेड. And the next is very in relation to no person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of either house. ये उसके बारे में अगर no person shall be liable in respect of the publication, तो कोई publication अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई liability नहीं है. ना ये पोर्शन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए. इट इज वेरी मच देयर, इट कैन बी अंडरस्टूड. सीता सोरेन के केस में जो हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज टू बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू 1052 के फर्स्ट पार्ट. ठीक है. 105 के फर्स्ट पार्ट, 102 के फर्स्ट पार्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू सीता सोरेन. Now Sita Soren is a recent judgment given by the Supreme Court which is basically overruled a previous judgment, that is PV Narasimha Rao versus state. Okay. Now हम लोग थोड़ा जानेंगे क्या ओवररूल हुआ और क्या नया आया. तो व्हाट वाज द प्रीवियस स्टेट? ये पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट इट वाज गिवन अराउंड 1995 1998 के टाइम. ठीक है. तो आज से 25 साल पुराना केस जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड दैट वाज स्टैंडिंग टिल डेट until Sita Soren came into the picture last month. ठीक है. last month. Now what is the PV Narasimha Rao is all about? So PV Narasimha Rao case is basically a case where cash for vote. ठीक है. आपको शायद बहुत जगह रिसेंटली या प्रीवियसली यू माइट हैव हर्ड लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर votes were basically cast in respect of money given. ये राज्यसभा लोकसभा में बहुत टाइम ये सुना जाता है. लोकसभा एमपी को खरीदा गया, एमएलए को खरीदा गया इन रिलेशन टू कोई भी लेजिस्लेशन पास किया जा रहा है, कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा रहा है, मोशन के अगेंस्ट में अगर आपको खुद को प्रूव करना है, मेजोरिटी प्रूव करना है, इन दैट केस द मनी और कैश हैज बीन गिवन और द ब्राइब्स हैव बीन गिवन. ठीक है. उसके चलते एक पर्टिकुलर मेंबर को ब्राइब दिया जा रहा है और वोट खरीदा जा रहा है. ठीक है. सो दैट के उनके सपोर्ट में वोट जाए. एंड that is there is a several cases that you will find in the history of Indian Parliament. Okay. And situation that's going on. But here particularly whatever we are going to talk about in relation to PV Narasimha Rao. Now PV Narasimha Rao के केस में जो जजमेंट था
पीवी नरसिम्हा राव के केस में, ठीक है। द जजमेंट वाज क्वाइट quote unquote infamous in nature. Infamous in nature, you will get to understand why. Now पीवी नरसिम्हा राव जब जजमेंट दिया गया था, इस जजमेंट में कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था कुछ चीजों का बहुत अलग था, बहुत अलग। Why it's so different? You have to understand why it's so different. The reason being, in PV Narasimha Rao judgment, the bribes were given to basically to cast vote in favor of party, okay, but the people who have taken the bribes, most of them given the vote in favor of the person who have taken the bribe from. But one person who have taken the bribe and he hasn't cast any vote. Okay. Now in that case, what has happened? This particular situation was challenged in the Supreme Court. If any particular member of parliament was taken bribe and given vote or not given vote, whatever might be the case, then he or she shall be liable in the court or not, or whether he or she will be enjoying the privileges and the powers under Article 105 or not. ठीक है, शायद आपको समझ आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई पैसा लेके वोट दे रहा है तो उस मामले में वो बंदा प्रिविलेज और पावर्स एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जनरली पार्लियामेंट में वोट देने के टाइम पूरा प्रिविलेज पावर सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास रहता है। But in case if that particular person is taking bribe and casting vote, whether he or she will be going to get similar kind of privileges or power or not. ये बेसिकली सवाल पीवी नरसिम्हा राव केस में उठा था। नाउ आप अगर ये पहली बार सुनोगे, when you going to hear it very first time, you will get to understand, सर पैसा लेके वोट दे रहा है तो ये सीधा सीधी से what is a illegal one, right? It cannot be, he cannot get the privilege and power because power and privilege that has been given for different reason altogether, ठीक है। but पैसा लेके वोट दिया जा रहा है is a prima facie illegal one. It cannot be legalized, right? But in PV Narasimha Rao case, the opposite was said, and that has to be understood in what parlance it has been communicated there. ठीक है, किस हिसाब से इसको बताया गया था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पीवी नरसिम्हा राव के जजमेंट को, तो पीवी नरसिम्हा राव के जजमेंट में they have basically interpreted two things very very clearly. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव के जजमेंट में दो फ्रेजेस को अच्छे से नोट किया। कौन से दो फ्रेजेस को, ठीक है। one of the phrase is basically this phrase, okay, once again. So one of the phrase is basically in respect of anything or any vote given by him in the parliament, okay. So court is basically saying in respect of anything. इसका एक broad meaning दिया, एक broad widest interpretation have been given in PV Narasimha Rao. Widest interpretation. What widest interpretation has been given? The court said this Article 105 and these powers and privileges, this have been given to the member of parliament or member of legislative assembly for one reason, so that they can basically come to parliament and raise all the people's voice which they are representing in the parliament. If any way their voices are being curtailed और उनका अगर पार्लियामेंट में जाके वो फ्रीडम किसी भी हद तक उसको नहीं दिया जाता है, then they will not be able to represent the
people whom they are representing. Okay, so that's why in the PV Narasimha Rao, the Supreme Court said कि देखिए in respect of anything, मतलब कोई भी मामले में मतलब if there is a nexus between the two things, okay, nexus between the vote given and done in the parliament or speech given done in the parliament, in any matter thereof, there will be powers and the privileges that any member of parliament will enjoy. मैं आपको सीता सोरेन के केस में थोड़ा वहां पर लेके जाना चाहता हूं इस मामले में टू शो यू द थिंग सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आप डायरेक्टली यहां पर जाके पैरा 105, okay, 105, you can open it, okay, and I'll show you what I basically communicating. You'll be able to understand. Sorry, 105 नहीं, 100, yeah, 100. Sorry, 100 is a paragraph. Now, what does it mean here? In the PV Narasimha Rao, if you open it, ठीक है, 105 के ये दो 105 के 105 के जो दो फ्रेज है इन रेस्पेक्ट ऑफ, इसको ब्रॉडर मीनिंग दिया गया एंड इनको बोला गया कि it is therefore concluded that any bribe given to purchase the vote of a member of parliament was immune from the prosecution, okay, of clause 2. अगर कोई पैसा देके भी वोट दे रहा है, दैट इज इम्यून, मतलब उसको प्रिविलेज मिलेगा, उसको इम्यूनिटी मिलेगा, बिकॉज he is immune to be charged against any bribery or under any act like prevention of corruption act. उसके अंडर में भी उसको इम्यूनिटी मिलेगा. Okay, the reason is his action ceased to have a his there is a nexus between the action or vote given or speech made, anything bears a nexus or connection between with the vote given or speech made. तो एक कनेक्शन होना चाहिए. अगर कोई पैसा ले रहा है, anybody who is taking the money or bribe, okay, and he is casting vote, so there is a connection between, in this case, in relation to anything, in respect of anything, that anything also including the bribery in this case. Okay, here that's how broader meaning has been given in relation to this. Okay, so he is casting the vote by taking the money. It is therefore concluded कि पैसा लेके भी वोट अगर दे रहे हो, अगर आप वोट दे रहे हो, so you are expressing your action there, so you are basically casting your vote, and if you're casting your vote, so then you are getting the privilege. Now in PV Narasimha Rao case, one of the person who has taken the bribe but didn't vote, वो बंदे ने जिससे पैसा लिया उसको भी वोट नहीं दिया और ऑपोजिट पार्टी को भी वोट नहीं दिया. In that case, that particular person who hasn't cast vote, he is not getting the privilege. He is not immune to be charged under any other act. समझना इस चीज को. PV Narasimha Rao, how it is basically very conflicting legal interpretation that has been given by Supreme Court. उन्होंने बोला अगर पैसा लेके वोट दे रहे हो आप, then you are immune. अगर आप पैसा लेके वोट नहीं दे रहे हो, then there is no nexus between your action and as a result you are not going to get the privilege. So to get the privilege, there has to be any nexus or connection with the vote given or speech made. Simple. Okay, so here PV Narasimha Rao is a very conflicting judgment in this sense. आप बोलोगे सर इस जजमेंट में
मैं तो प्राइमा फेसी देख पा रहा हूं दिस इज अ रॉन्ग जजमेंट ऑल्टोगेदर. देयर आर सम जजमेंट्स व्हिच आर वेरी वेरी डिबेटेबल एंड कंट्रोवर्शियल दैट हैव बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, बट दैट्स हाउ इट इज. पीवी नरसिम्हा इज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल डिबेटेबल जजमेंट. ओके, जहां पर ये बोला गया है आप पैसा लेके वोट दे रहे हो, व्हिच इज अ फेयर वन, इज अ फेयर वन, इट्स अ लीगल वन, बिकॉज देयर इज अ नेक्सस बिटवीन व्हाटएवर यू आर डूइंग. आप पैसा लेके वोट तो दिया, आप पैसा लेकर वोट नहीं दे रहे हो, देन यू आर नॉट इम्यून. आप उसके प्रिविलेज नहीं मिलेगा आपको. दैट्स हाउ इट इज. Okay, so that was the law till March 2024 because that was standing 105 में. तो पैसा लेके आप वोट दो ना दो and lot of things are there. Now in the Sita Soren case basically it was overturned. It is basically said कि देखो पैसा लेके वोट देना it cannot be justified in any case. And उनको justification देने के लिए there is one necessity test given by the Supreme Court in this particular judgment. Necessity test. ठीक है, necessity test मतलब if any particular member of the parliament, okay, who is casting the vote or speech is given, that has to be in exercise, has to be in relation to the exercise of that parliament, उसके इफेक्टिवली रन होना और एफिशिएंटली रन होने के लिए जितना आपको करना है उसके लिए अगर स्पीच दे रहे हो, वोट दे रहे हो, फॉर दैट you are going to be immune, not more than that. So the necessity test is talking about what is necessity to run the smooth functioning of parliament. If your speech or vote is basically within that periphery, you are immune. But if your speech or vote not related to any other thing or going beyond that or any action going beyond that, then you will not be immune. Simple. Here in this case, this necessity test actually sidelined the idea of bribery because Supreme Court said in the Sita Soren case, देखो bribery लेके अगर आप किसी को immune कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि you are putting the people who have taken the bribery on a different pedestal altogether. मतलब आप उन्होंने गलती कर रहा है. These people are making mistakes, not mistakes, they're doing the illegal things, but you are putting them in different pedestal. जो general law of the land है, they are not applying on them because being a parliament and being in parliament, though are taking bribes, they are not going to be charged under Prevention of Corruption Act. उसके अंदर वो लोग चार्ज नहीं हो सकते हैं. क्यों? आर्टिकल 105 है, बट आर्टिकल 105 का लिमिट उतना दूर तक नहीं है. आर्टिकल 105 का लिमिट इतना दूर तक ही है कि यानी पार्लियामेंट को स्मूथ फंक्शन करने के लिए स्पीच और वोट देना पड़ेगा, उतना दूर तक ही है. दैट्स द होल प्रोसेस टू इट एंड दैट्स द होल पिक्चर टू इट, नॉट मोर देन दैट. सो if bribery is getting legalized via article 105, then the MPs and the MLAs, they are in a different pedestal than the normal people, which they are not actually. In parliament they have been given a special लीवे मतलब स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है उन लोगों को कि आप हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसलिए आपको ये दिया गया है. दैट्स ऑल. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका फायदा उठाओगे. फायदा इसलिए उठाओगे आप पैसा लेके वोट दे रहे हो and the privileged one. That's not how the case is. Okay, so in that case, in the Sita Soren case, this thing have been changed and this article 105 interpretation now is totally changed in relation to this necessity test. Okay, so जो पीवी नरसिम्हा राव के जजमेंट में दिया गया था उसको टोटली चेंज कर दिया गया. Okay, so article 105 is a very important and I have given a crystal clear understanding regarding that. Okay, crystal clear understanding regarding that. Okay, so if you have any query, do let me know in the comment box if you have any query. अगर आप कुछ any query regarding this particular case आप इसको मुझे पूछ सकते हो regarding this. Okay, any query?
So I have shared with you this very important part, Article 105K 1 or 2. You can go to 194, you will find the same thing. I don't need to explain the aspect. Okay. So this is the very important stuff regarding the parliamentary privileges, Sita Soren. And I hope you understood this part. Okay. And if you have any query, to let me know. Any query, कुछ query है आप लोग? कुछ query है आप लोगों का? Okay. Yes. So thank you very much, and see you again in another video talking about. See you next week talking about another very important aspect for your CLAT PG preparation. Okay, and if you haven't subscribed to the channel, do subscribe to it. And any other query if you have, do let me know in the comment box. Not right now, maybe in the future I'll just answer those. Okay, so see you again. Thank you.